Srini, I will send you a co-host request. Okay, so the point is, every bull run has 10, 15 scripts which go to unrealistic levels, and with so much of noise around, it's distributed all around the country and all around the world. Eventually, these scripts will be decimated. If you don't know history, I'll give you some examples. Many of them, many of them. So, if you are enamored by the promoters or the operators, it's your funeral. And I had tweeted that Usman Bevda and all that is dementia. So, a guy wrote to me that Usman Bevda conducts spaces. I don't know what he has got against me. I will always side with the people over here or in the market or anywhere, and I will be against the promoters all the time. But few people are so enamored by the promoters. I don't know. You will have to be very careful, very, very, very careful. This cable company quoting at 70,000, he was so much. And what? अपने इंडिया मार्ट इट्स अ शैम एक वेबसाइट है क्या धंधा है कैसे करता है खुद का ही माल खुद बेचता है दिस इज वेरी कॉमन इन फ्लिपकार्ट ऑल्सो it happened before they sold it off to Walmart. They paid up their sales and everything. Okay, anyway. Today was Reliance's result. Year on year, flat like a flat soda. Nothing, nothing. I don't know how come it's quoting at this rate. This HDFC Bank, flat as soda, negative. Everything is negative. Then why are we buying shares? We buy stocks where there is growth. There is no growth. But I think we are all accustomed in these 2-3 years to buy wallpaper at exorbitant rates. अरे मत लो ना वॉलपेपर बहुत अच्छा शेयर मिलता है लो लेकिन नहीं लेगा आप लोग जिधर ऑपरेटर है जिधर प्रमोटर है वही आपको लेना है लो the end will be very bad. Another thing I noticed, and I talked to quite a lot of people, why the market is not falling. Because it seems everybody short in the market by way of calls or puts or Nifty, Bank Nifty. Now, whenever that gets over in 2-3 days, the market will go down. And forget the market will whether it goes down or not. Individual stocks will take a beating, huge beating. Now, classic case is Jubilant Foods. Last quarter, it reported a number of 47 crores. So, if I were to multiply it 4 times, so it will be 200. And market cap is 35,000 crores. What nonsense is this? Why? Why?
Why are we paying so much? Has anybody asked why I'm paying so much? No. Nobody knows what was the result last quarter. What was the rate at that time? ये तो ITC 300 एक्चुअली 150 से चालू हुआ 500 हो गया. निफ्टी बढ़ गया, रिलायंस बढ़ गया, ये और दो तीन NTPC नाइक है. You are being made fool. Lot of people fight with me. देखा बुल, अरे देखेगा क्या देखेगा, मेरे को क्या है, अपना तो 7 साल से और 3 साल रहेगा शॉर्ट, क्या फर्क पड़ता है. बट आपका क्या, यू आर लुकिंग एट द मार्केट मिनट टू मिनट. ऐसे नहीं होता है. Wealth will not be made by looking at the market on a daily basis or on a weekly basis. If you take a long term view, whether short or long, then only you will be able to make money. Again, don't play Nifty options, Bank Nifty options. You will ruin yourself. आप बर्बाद हो जाओगे. ये जो पोलीकैप का सट्टा हुआ 3 दिन में, तो मैंने डाला रिजल्ट तो भाई खराब है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, बहुत ही डाउन है. तो एक चंगुल ने लिखा that you have to look at year on year. अभी कौन ये गधे को समझावे कि इतना मार्केट कैप, इतना पी देने का मतलब क्या होता है एक केबल बनाने वाली कंपनी को. और एक बात है, कल एबीबी टूटा, क्यूमिंस टूटा, सीमेंस टूटा. तो 2-3 जन लिखा कि देखा ये टूट गया, ये तुम्हारा बी हो गया ना, ये हो. अरे भाई टूटा तो टूटा, मेरे को क्या है. लेते बेचते पर जो ओरिजिनल है वो, उसमें क्या फर्क पड़ता है 300 रुपया घट गया कि 500 घट गया. ये थोड़ी ट्रेडिंग का माल है. और ट्रेडिंग का माल होता तो 10 रुपया भी नहीं पोसाता मेरे को. लेकिन इन्वेस्टमेंट का है. कितना साल हो गया, माय गॉड, years, donkey years back. Never ever give up good shares. वो 2-5% का चक्कर में पूरा आपका पोर्टफोलियो खाली हो जाएगा. और ये जो सब है, मुझे बराबर याद है और मैं शायद बोला भी, 110 में मैं चोला फाइनेंस बेचा था. वो 2020 में एक दिन वो खुन्नस आया तो 115 था, 110 करके मार दिया. फिर वो खुन्नस हट गया, समझ में आया कि ये तो बढ़ रहा है, तो 130 में काटा, ऊपर में 1200 हुआ. ये क्या है, क्या व्हाट नॉनसेंस. फाइनेंस कंपनी ऐसा. ऑलमोस्ट ऑल द शेयर्स आर पोस्टर शेयर्स. आप लोगे तो आपके घर में पोस्टर ही लगाना पड़ेगा. उसमें वेल्थ क्रिएट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. और अगेन आई एम मेंटेनिंग, fall will come 110%. What goes up, it will come down equally fast. But I am not hazarding a guess when it will happen.
Mal- If you ask any intelligent person, forget intelligent person, a low IQ person, are the valuations justified? 40 times, 50 times, 60 times, anything. Why? Why? Why they are not at 4, 5, 6, 7 PE? Why? You look at the US markets, you will find so many scripts available at 4, 5, and and good dividend yield. So I think your whole investment thesis has to be checked, and don't buy momentum. That's a perfect way of getting it trapped. Yeah, Chirag, you take over. Right, sir. Okay, I'm just accepting some requests. Yeah, Adnan, please go ahead. Monil, you want to say something? Yes, yes. Sarath sir, good evening. So just wanted to know your opinion on the Engineers India. So what do you think of it? Like, is it a good play on the capital goods front? No opinion on stocks, only FNO stocks. Okay, sir. Thank you. Sir, went long in Infosys when Infy fell 9% today morning. Futures में long किया. क्या बोला भाई? Infosys 8% गिर गया ना सर, उस टाइम लॉन्ग किया Infosys को. हाँ तो अच्छा है ना. क्या सर, क्या वो हो सकता है? मेरे को एक एक बार डाउट होता है, फ्यूचर इस बैंक नहीं बनता है ना. हाँ या This won't become future S bank, right? हाँ क्या बोलते हो? This won't become future S bank, right? Chirag, what is it? Sir, he's asking. He's bought Infosys this morning, When it and fell 8%. he's wondering if it will not. I mean, if it's the right decision, and if it will not become a future Yes Bank. यार क्या बोलेगा? I had tweeted it's a fraud guidance. So you should ask before you buy or after you buy. You ask. Sir, morning there was no time. Can I ask a question? Wait. Just wait, please. Morning there was no time to ask, sir. When it fell 8.5%, I thought it's a good buy now. एक 50-60 रुपीस रिकवरी तो बनता है अब. लेके भाई क्या हाँ तो आया रिकवरी. रिकवरी आया. मेरे को 1338 में हो गया है एक लाट. 1344 में दूसरा लाट हो गया. बेटा 1350 जाके रिवर्स होके इट केम बैक. सो क्या सर, इस इन्फोसिस बढ़ेगा, एक 1500 तक जा सकता है. नहीं नहीं 2000 होएगा. कब सर? कितना? हाउ मेनी मंथ्स शुड आई रोल ओवर? नहीं नहीं मंथ किधर, मंडे को ही 2000 हो जाएगा. क्या है? ओके, एक लॉटरी लग गया. थैंक यू. हाँ 2 दिन तो आराम से सो जा भाई, तो खुश हो जा. Sarath sir, one question from my side, Umesh. So, what is your views about SRF in short? SRF बिफोर स्प्लिट 200 रुपए का जब ये था, ऑलमोस्ट 6 साल से आई एम रेगुलरली इन्वेस्टिंग. अभी 1 साल से कुछ. अरे भाई साहब तेरे नहीं मैं क्या बोलता हूँ,
जी बोलिए। आपने कितने में लिया, क्या किया, मेरे को वो क्यों बताते हो? आप पूछो ना, क्या पूछना है वो पूछो। आप यस क्या सर, फ्यूचर का ही किया पूछ है रहे हैं कि उसका क्या? कुछ अभी गाड़ी चल नहीं रही 1 साल से, आगे चलेगी, क्या होगा सर, थोड़ा सा बताएंगे तो। 400 रुपया आ जाएगा। 400 आ जाएगा। बोलो। तो आ जाएगा। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वो इन्फोसिस में 1400 कॉल में कुछ बेची हुई थी, उसमें फंस गया हूँ, तो डिलीवरी लेनी चाहिए या लॉस बुक कर लेना चाहिए? क्या 1400 का कॉल नहीं बेचा सर, है? 1400 का पुट बेचा था, तो अब हाँ, तो डिलीवरी आ जाएगी इसमें इस महीने, तो डिलीवरी लेनी चाहिए या लॉस बुक कर लेना चाहिए मुझे? नहीं नहीं, डिलीवरी ले ना। कितना एक है ही लॉट पुट? है सर, एक ही लॉट है। हाँ तो ले लो डिलीवरी। ओके, थैंक यू सर। और एक बात सर बताओ। ये आपके पास में 200-300 करोड़ है क्या? नहीं है सर। नहीं तो ये पुट क्यों बेचते हैं? सर उस समय तो रेट 1480 चल रहा था। अरे वो छोड़ो, पुट क्यों बेचा तुमने? और पुट वो कौन बेचता है? जिसके पास 100-200 करोड़ होता है। सर सर तुम क्या पुट बेचा? हाँ? ले डिलीवरी, रखो और मजा करो। और एक एडवाइस देता हूँ, प्लीज डोंट सेल पुट्स ऑफ एनीथिंग। दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड, सर सेलिंग पुट्स। इधर कितना एक्सपीरियंस सर 1 साल। है? अच्छा है, अच्छा है। और 5-6 महीना बाजार में रहेगा बस तू। ऐसा मत खेलो यार, ऑप्शन बॉप्शन, तुम पागल है क्या? Who who has taught you all this nonsense? सर वो तो यूट्यूब वगैरह में, जो ट्विटर में जो आता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। यस यस इस गुड इवनिंग। मैं ये पूछना चाहता था कि अगले 2 से 3 महीने में बिफोर द इलेक्शन स्टार्ट, जो 5 स्टेट इलेक्शंस होनी है, आपको क्या लगता है निफ्टी कितने लेवल तक नीचे जा सकता है? अब पता नहीं भाई, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। निफ्टी का मालूम नहीं है यार, वो 25,000 भी हो जावे, 15,000 भी हो जावे। वो तो 4 स्टॉक ऊपर हो जाएगा तो 25,000 हो जाएगा, और 4 स्टॉक डाउन होएगा तो 15,000 हो जाएगा। वो ये बैरोमीटर का कोई वैल्यू नहीं है। आप खाम खा अपना दिमाग खराब करते हो। आप स्टॉक्स का बात कीजिएगा। पैसा स्टॉक में बनता है। इंडाइसेस आर फॉर द रिच एंड द फेमस, उनका ये टाइम पास है। आपके पास अगर है 50-100 करोड़, बेशक खेलो, मस्ती करो, लेकिन उससे कम है तो उसके बारे में सोचो ही मत। राइट सर, थैंक यू, थैंक यू। Good evening, Sharad sir. गुड इवनिंग। Sir, I have started accumulating Atlantis Beck India. So can I add more at this level? यू एड अपने लिल्ड इंडिया। Okay, sir. Thank you. Good evening, Sarad sir. Just want to know what is your view on Indian PSU railway stocks? ये डिफेंस में जैसे रैली आई, ऐसा चल सकते हैं क्या 2-3 सालों में? बी ग्रुप के बारे में हम नहीं बोलेंगे, ओनली एफएनओ स्टॉक्स। देखिए बी ग्रुप कैसा होता है, आपको जो भी करना है वो हो सकता है। ओके, उसमें शॉर्टिंग अलाउड नहीं है। राइट राइट सर, कैश में ही काम है सब तो फिर कोई मतलब नहीं है ना उसके बारे में चर्चा करने का।
ये राइट्स आज बढ़ा 450 हुआ, वो 1000 भी हो जाएगा, क्या भरोसा भाई। गुड इवनिंग शरद सर। ओके, थैंक यू। या आप बोलिए भाई। गुड इवनिंग सर, मैं पूछना चाह रहा था कि सेल, क्या मेटल स्टॉक में अभी सही टाइम है एंट्री लेने का? मैं सेल थोड़ा सा देख रहा था बाय करने के लिए। ले लो 93 के ऊपर चले तो। 93 के ऊपर सर, लगभग सर क्या रेंज एक मन में बना के चलूं? 93.5। 93.5, ओके सर, थैंक यू। Good evening, sir. Sir, once again, Monil here. Sir, just wanted to understand your view on Delta Corp. 30 rupees. Okay, sir. Thank you so much. सर मेरे पास 70 शेयर एबीबी के पड़े हैं एट प्राइस ऑफ 3310। तो अभी जैसे गिर रहा है तो मैं उसमें और थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, तो अभी राइट प्राइस है या थोड़ा सा और वेट करके करिए? नहीं, अभी ऐसा कीजिएगा 4300 के ऊपर जाएगा ना तभी ऐड करो। ओके सर, ओके। हेलो। या हाँ सर, ये टाटा मोटर्स के ऊपर लॉन्ग टर्म व्यू और ओएनजीसी के ऊपर लॉन्ग टर्म व्यू आपका सर? ओएनजीसी पे कोई लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है। 50 साल के बाद भी यही भाव रहेगा, 10 रुपया इधर उधर। टाटा मोटर्स शायद ऊपर जा सकता है, बट अभी चांसेस नहीं लगता है। ओके सर, थैंक यू। चलो भाई। Yes. Okay, who's next? Ismail, you want to ask something? Ismail, please speak. He's gone. Okay. अंकित। नमस्ते सर, मैं अंकुर बनारस से। बोलो बोलो। हाँ सर, मेरा आप एक व्यू दे दीजिए सिटी यूनियन बैंक पे। मैंने 121 पर लिया हुआ है, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट है, तो इसको रखना चाहिए फॉर द ईयर। अरे जब प्रॉफिट होता है तो बेचो ना, ले ना, भागो। ठीक है सर। और सर आप जो ये बाजार में एक चीज याद रखना, हाँ, जहाँ पे भी नफा दिखे ना लेके भागो। भागते हुए भूत की लंगोटी पकड़ लो। ठीक है सर। आप जुबलियंट का नाम लेते हैं। बर्गर किंग मेरे पास है, 140 पर लिया हुआ है, 110 के बीच ये वो कर रहा है, काफी हाई पे 200 तक गया था। बर्गर किंग के बारे में, आरबी रेस्टोरेंट ब्रांड एफसीआई के बारे में सर क्या है लॉन्ग टर्म? ओनली वेस्ट लाइफ, वेस्ट लाइफ। अच्छा सर, वेस्ट लाइफ। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। जिनका हो गया सवाल प्लीज ड्रॉप ऑफ कर जाइए, क्यू में काफी लोग हैं। बोलिए भाई साहब, बोलिए। सर मैं बोल सकती हूँ? नोबडी। हाँ, हाय सर। सर अशोक लेलैंड के बारे में आपका व्यू? नहीं, अच्छा है। द ट्रैजेक्टरी इज अपवर्ड्स। थैंक यू, दैट्स इट, थैंक यू। निकला है उनके लिए तो अच्छा दिया है आज। इसके बारे में क्या सर कुछ व्यू मिल सकता है? नहीं सर, बी ग्रुप का हमको नहीं मालूम है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर सीजी पावर वेस्ट लाइफ में क्या भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? सीजी पावर का इतना मालूम नहीं, क्योंकि मार्केट कैप अभी अब 65,000 करोड़ हो गया भाई, तो थोड़ा संभालना पड़ेगा। लेकिन ये जो वेस्ट लाइफ है 13,500-14,000 करोड़ है, तो अगले 2-3 साल में 40-50 हजार करोड़ हो जाएगा।
सर पावर क्या व्यू आपका? हाँ किस पे? पावर ग्रिड नहीं, इट्स नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट. उससे अच्छा तो આપણે उसका ये ले लो ना, આપણે इनवाइट ले लो, पावर ग्रिड इनवाइट. It will give you a good return. हेलो, Yeah. गुड इवनिंग टू ऑल स्पीकर्स. मुझे पूछना था कि जैसे all the stocks that go into F&O ban we are seeing all the time, even bigger companies like Polycab and all. I mean, क्या कर सकते हैं realistically इसमें? Because I can't think of anything realistic, like just banning a security from transaction. You can't do anything, right? I mean, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? कुछ स्टॉप गैप की ऐसे मतलब बार बार नहीं हो. नहीं, एक क्या था, ये 2020 के पहले मार्केट वाइड लिमिट 1 करोड़ हुआ करता था, सपोज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक. फिर ये जो कोविड आया तो सेबी ने उसको आधा कर दिया, 50 लाख. वो कोविड का अभी भी वो रिवाइज नहीं हुआ है, वैसे का वैसा ही रखा है. इसके लिए बार बार इतना स्टॉक सब मार्केट वाइड बैन में जाता है. I think SEBI is totally wrong in doing this. Now there is no fear of a run on the market or anything. They should open up, and also short selling in India is banned. FIIs cannot short sell in India. Now this makes this market so precarious to any untoward incident. You will not understand. A hollow market is the most dangerous market. You might feel nice, just like Infosys. और बटर में छुरी, गरम छुरी, छुरी पे बटर, जो भी बोलो वो ऐसे ही होगा एक दिन. पूरा मार्केट will just collapse because there are no short sellers. And as we speak, the total outstanding future stock position is 240,000 crore. That's too much, unbelievable. I hope you understand some things, dear. हाँ, मैं समझ गया. लाइक वही थोड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना मार्केट में. वही इवन लाइक कैश स्टॉक्स में भी 2% का सर्किट है कि इतने, तो मतलब वही इट्स अ वेरी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. समझ गए? नहीं, अभी ये यूएस मार्केट है, उधर इंडेक्स लेवल पे सर्किट है, but stock wise no circuit. A stock can go from $1 to $100 in a day, and $100 to $1 in a day. वो तो ही तो एक कैपिटल मार्केट, वो तो ही ठीक रहेगा ना. तू मटकाएगा सबको, कितना दिन एक करेगा. But here the argument is that the investors are novice, they don't know, they are not. And I don't think that's a good argument. It should be a सर डीमार्ट के बारे में बताना कि उसमें बने रह सकते हैं फ्यूचर के लिए कि अभी एग्जिट कर दें, क्योंकि 2-3 साल से नहीं चल रहा है वो. Kuldeep, we'll invite you to speak. All request all speakers to just wait. One by one, we will call your name and we'll ask you to speak. Sharat ji, please continue. I forgot what I was saying. आप बोल रहे थे short selling is not allowed and structure. It's a see. Okay, I'm also a part of the market. I will play according to the rules, but I know these rules are so screwed. That is going to kill all of us, not you, but me included. Because this is a very dangerous ploy, very dangerous market. In April, May, June, July, the market went up by 3,000 points. Unheard of, unbelievable.
It's almost 50% of the market that was there for donkey years. So, any which way, thank you so much. Yeah, Cloudy Thunder, I'm assuming. This is the hidden self. Yeah, please go ahead. हेलो शरद सर नमस्कार नमस्कार सर मैं सर नया हूँ इन्वेस्टिंग में और फाइनेंस का स्टूडेंट नहीं हूँ मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है वैल्यूएशन वगैरह की बहुत बेसिक कॉमन सेंस पे चलता हूँ तो जैसे आप वेस्ट लाइफ शेयर सजेस्ट करते हो तो उसको मैं खोल के देखता हूँ तो उसका पीबी वगैरह काफ़ी ज़्यादा दिखता है और तो मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के लिए अगर 50,000 1 लाख लगाना हो तो मैं लगा सकता हूँ लेकिन ज्यादा लगाने में वो कंफर्टेबिलिटी आती नहीं है तो आप कुछ वैल्यूएशन पे बात कर सकते हो क्या नहीं, वैल्यूएशन is a figment of your imagination and your philosophy in life. कि आपको सस्ता पसंद है या महंगा पसंद है, क्योंकि सस्ता चीज और सस्ता होएगा, महंगा चीज और महंगा होगा. Having said this, you don't look at the absolute P. It's historical. Now, if I were to explain to you Westlife, it's 13,500 crores and it's not doing great numbers in terms of profit because there is too much of depreciation. Have you seen that? नहीं सर बहुत बेसिक नॉलेज है बस मुझे इसीलिए आपसे बात करनी है बस इस पे यार बेसिक नॉलेज है तो सीधा ही डायरेक्ट बोल देता है महंगा है सस्ता है. नहीं सर ठीक है. बात बस ये थी कि जैसे अगर नॉर्मली कोई अरे एक मिनट सॉरी टू इंटरप्ट सर, आप समझाओ डेप्रिसिएशन वाला एंगल समझाओ ना, हम समझ रहे हैं, समझाओ आप सर को काटो मत बीच में भाई प्लीज. ओके सर ने पूछा था तो बोला सॉरी. हाँ नहीं नो इश्यूज बेटा. ये क्या होता है कि नेट प्रॉफिट आया 12 करोड़ रुपए तो उससे पी निकलता है, पर वो 12 करोड़ आया 30 करोड़ का डेप्रिसिएशन के बाद में. तो मैं जब दिखता हूँ तो ये सब देखता हूँ और उनके कितने स्टोर्स खुलेंगे 2 साल में वो मुझे मालूम है, उसका मुनाफा क्या होगा, टर्नओवर क्या होगा. और आप बाजार में नए हो इसके लिए बोलता हूँ, ये पीबी मत देखा करो राजा. मेरे पास जितने भी शेयर है ना सबके पी 70, 80, 100 ही होंगे. आपको दिखता है 100 लेकिन वो वास्तव में 20 का ही पी होता है, क्योंकि आगे जो अर्निंग आने वाला है वो सब देखना पड़ेगा दोस्त. तुम मनी कंट्रोल पे जाके पी रेशियो देख लिया उसे कुछ नहीं होगा. अच्छा सर जैसे मेरी 2 होल्डिंग है, एक मैंने फोर्टिस लिया हुआ है, एक यूएस में मैंने पीएफई फाइजर उठाया हुआ है और बाकी जो हल्का फुल्का ट्रेडिंग है वो करता हूँ, तो उनमें ज्यादा पैसा लगा हुआ है. लेकिन जैसे वेस्ट लाइफ पे आप इतने कॉन्फिडेंट थे तो मैंने वेस्ट लाइफ को देखा तो अगर इतना पीबी और पी है तो अगर कोई भी ऐसी रिसेशनरी या ऐसी कोई चीज आती है अगले 1-2 सालों में जो कि प्रिडिक्टेड भी है और लोग जिनके बारे में बातें कर रहे हैं, तो क्या 1-2 बुरे या बहुत ही ज्यादा खराब रिजल्ट पूरी वैल्यू वाइप आउट नहीं कर सकते हैं कि 10 या 20% गिर गया और हम 2-3 साल के लिए ट्रैप हो गए ऐसे शेयर्स में? क्योंकि जैसे कॉस्ट सेंसिटिव अगर कस्टमर होगा तो मैकडोनल्ड्स वगैरह का बिजनेस क्या उतना स्टेबल है? इसलिए सर बस थोड़ा जानना चाहूंगा, बस डर लगता है बड़ा पैसा लगाने में वेस्ट लाइफ जैसे शेयर में. नहीं वो ठीक है, आप लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता. उनका मेनू में सबसे लोएस्ट आइटम है 70 रुपीज और सबसे महंगा आइटम है 450 रुपया. सो इट केटर्स टू एवरीबडी. एंड लुक, it is McDonald's I'm buying. I'm not buying any Indian company. And as far as you said of Fortis, yes, good investment. Pfizer, very bad investment. It won't move only. आप थक जाओगे.
मुझे भी थोड़ा नॉलेज है उधर का, तो फाइजर इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। उससे अच्छा फोर्ड मोटर ले लो, $14 है, 13 होएगा, ऊपर में 19-20 हो जाएगा। फोर्टिस है वो 25-30 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, 4-5 साल में 1 लाख करोड़ हो जाएगा। एमएनसी है। और कुछ पूछना है भाई? नहीं सर, बस वही थोड़ा डर था बस वेस्ट लाइफ को लेके, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। ओके, Adib, you have any question? गुड इवनिंग सर। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि पीएसयू बैंक्स को लेकर आपका क्या आउटलुक है सर? आई एम लुकिंग स्पेसिफिकली एट स्टॉक्स लाइक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर कुछ आपकी इनसाइट्स है तो। अच्छा है। आईडीबीआई बैंक लो, ओके बिकने वाला है। ओके। Ankur, you have a question? Ankur? No, sir. I am just listening all of you. You provide me in the list of listeners. Okay. Kuldeep ji, you were asking something. गुड इवनिंग सर। सर मेरे को ना डीमार्ट के बारे में पूछना है कि उसमें इन्वेस्टेड हूँ ऑलरेडी कोविड से, तो उसमें बने रह सकते हैं कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल करके किसी दूसरे स्टॉक में रन कर सकते हैं फ्यूचर के लिए 5 to 10 years, 15 years? भाई साहब, डीमार्ट का ओनर मेरा जिगरी दोस्त है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। चलिए उस नेक्स्ट में sorry sir, any specific IT stocks for long term was last question. as Scient India is good. Okay sir, thank you. Scient Single और Scient DLM जो अभी IPO है तब वो? दोनों। Okay sir, thank you. Okay. Nataraj ji. थैंक यू सर। देयर इज अ न्यूज़ ऑन आईटीसी, होटल का डीमर्जर का ऐसा पॉसिबिलिटीज है बोल रहा है। इफ एट ऑल दैट हैपेंस अपकमिंग एजीएम, what could we can anticipate, with that news? Will further rally, or I'm not sure what will be the impact of that. If we can add some value, it will be great help for me. It's only a rumor, dear, and people like you buy that story. That's the problem. No, I'm not. I'm not buy, sir. I'm not buy. Possibility क्या हो सकता है? No. नहीं, I said you buy the story. अच्छा, okay. Useless. These are rumors, yaar. Ignore rumors, yaar. Nataraj ji, I've heard this story 3 times in the last 3 years. आप जरा गूगल कीजिए। No, sir. My question is, I'm not worried about trade. If at all it happens, अगर हुआ तो क्या हो सकता है? Possibilities. ये पूछ रहा, that's all. 1200 हो जाएगा, बस खुश। No. Because you are asking, suppose if it happens. अरे what suppose? Let it happen first, no? Okay. See, stock market is about probabilities. It doesn't mean thinking about all possibilities. No, please. Remain in probabilities only. Don't go into possibilities. You will not make money like that. See, the whole point of us talking, I talking, you asking, is to find some idea to make money. But all this will not make us any money. Okay.
Sarvendra ji, you want to say something? I have not invited you. I'm assuming you are part of the panel, so if you have anything to say right now. नहीं, मैं तो अभी आई एम जस्ट ऑन द लिसनर मोड. आप लोग थोड़ा करिए, मैं बोलता हूँ. मतलब माय व्यूज आई विल शेयर. देखो मैं इंडेक्स में हमेशा शेयर बाद में आए हैं सर, बाद में आए. या ओके. मयंक. या हाय शरद जी आपको याद होगा 15-20 दिन पहले मैंने आपसे एक्सचेंजिंग और डीसीएम श्रीराम डिस्कस किया था. हाँ. तो बोथ हैव रैलीड 40-50% 15-20 दिन में ही. अरे वाह, कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. तो मेरे को अभी 2 स्टॉक डिस्कस करने हैं आपसे. वन इज भारत गियर. मार्केट कैप इज अराउंड 200 करोड़ एंड इट इज ओन्ड बाय अपोलो टायर फैमिली and sales is very good. It's around 700-800 crores. And the other stock is Sumit Securities, holding company of RPG Group. उनके पास KEC, Gensar और Seat के बहुत शेयर हैं. And it is available at 90% discount. 10% में मिल रहा है. तो मतलब ये सेफ प्ले लग रहे हैं. 90% से 70% होते ही तो डबल हो जाएगा स्टॉक. अच्छा है, वेरी गुड. बट मयंक जी, होल्डिंग कंपनी में लिक्विडिटी नहीं होगी, आपको उसकी कुछ वैल्यू. शरद जी, इफ यू वांट टू ऐड टू दैट. नहीं यार, अभी यार ऐसा बहुत कंपनी है होल्डिंग कंपनी जो इतना डिस्काउंट में मिलती है. क्या मतलब है लेके. 90% पे कौन सी मिल रही है. इट इज एज गुड एज फ्री. अरे फ्री में लेके भी क्या करोगे यार, वापस वो फ्री में ही बेचना पड़ेगा. नहीं सर, 2-3 साल में ना इसका 60% डिस्काउंटिंग आ जाता है, तो ये डबल ट्रिपल हो जाते हैं. ओके. मतलब इट इज अ सेफ दिस थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नहीं, आई एम इन द मार्केट फॉर एग्रेसिव प्लेस. Okay, so just look at Bharat Gear once. Yeah. It is owned by Apollo Tyre family only. Converse की है ये. Just have a look, then we'll discuss someday. Okay, definitely. Okay. Thank you. Manish ji. Hi, good evening, sir. I have query on 2 stocks. आप बोलिए ना. Hello. Good evening, sir. I have a query on 2 stocks. One is Devyani and other is AU Small Finance Bank. Devyani is very expensive. 25,000 crore market cap. AU Small Bank is a managed stock, operator driven stock. So means दोनों से निकल जाना चाहिए और कोई ऑप्शन देखी जाए. नहीं, I am not suggesting that. देखो वो स्टॉप लॉस रख के खेलो यार, क्या है. Okay, sir. Thanks. Vikram. Yeah, good evening, everyone. Sir, your view on Atul Industries and Aarti Industry. Atul Industry today reported numbers. Against 180 crores, it came out with profit of 104 crores. ऐसा बकवास रिजल्ट से क्या फायदा होगा. और दूसरा बात है, कौन सा है, आरती इंडस्ट्री. सर आरती उतारो, नवरात्रि में आरती उतारो उसकी. ठीक है सर. 10-20 रुपया हो जाएगा क्या. ओके, ठीक. थैंक यू सर. रामा जी, रामा अय्यर. शरद सर नमस्ते.
Yeah, we can hear you. Go ahead. Just I wanted Sharad sir's view, long term view on Jubilant Footwear. Maybe 150 rupees. Okay. Based on the results. Yeah. If you look at the result of last quarter and the quarter before, and this quarter it's reporting on 25th, you'll be amazed that with so little profits, how the price is up. Okay, sir. Ramaji, you need to Sharadji, a little side comment, if I may. Yeah. See, what is their primary offering? It's pizza, right? Correct. And if you see how what was their USP? So when they launched here, I remember ordering for almost 20 years now. तो उनकी ऑफरिंग प्राइमरी ऑफरिंग क्या थी कि आप फोन पे फोन करो, फोन पे आई मीन कॉल देम and they will deliver the pizza to your home, right, in 30 minutes. Correct. Right? And that was a very promising offer. But today, how does everybody order around you? You pick up your phone and you open Swiggy or Zomato and you order from there, right? So now they are competing with dozens of pizza outlets, right? And they don't have a prominent in-store sort of a model like McDonald's. Correct. Right? So if you see in that context, their competition has actually increased manifold. Yeah. Right? Whereas for in-store, where traffic comes in via footfalls to malls, etc. So there the model is a little different. Yeah. You need to see it in that context. So maybe they will reinvent themselves. Maybe they will take on some more franchisees. Maybe they'll become more delivery oriented. Maybe they will have a secondary brand which focuses on delivery. I don't know. All that is in the future, but you need to see that in this context, that they are now competing on a much wider base than their initial model. Correct. So I mean I agree with you, and so Zomato is, of course, I have added some Zomato also around 52. So that has done well for me. And one more stock is there, that is Barbecue Nation. So and Jubilant has some stake in that. So I just want to have a view on that also. Sharad sir's view or your view on Barbecue Nation. अरे सब वो छोड़ो ना यार, वेस्ट लाइफ ले ना, काय को मगजमारी करते हैं. यस सर, वो वेस्ट लाइफ तो हाँ लिया हुआ है थोड़ा, आपने बोला तो फिर लिया हुआ है, तो ये भी देख रहा था मैं, सो दैट आई कैन मेक ए बास्केट बन जाएगा इसके लिए. अरे भाई, बास्केट बनाने का तेरा रिटर्न 0 होगा. ओन द बेस्ट बस. ओके सर. या और ये जो पिज्जा का चिराग भाई बोला ना, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर क्वालिटी हैज गॉन टू द डॉग. They introduced डोमिनोज बिरयानी, वो भी सक्सेस में हुआ. और भी और जैसे वो चिराग भाई ने बोला कि 10 वो दुकान और है, अभी 10 क्या 50 दुकान और है. तो कंपटीशन बहुत हो गया. और माय ओनली प्रॉब्लम इज विद द वैल्यूएशन. ओके सर. इट्स वेरी हाई. Good evening. Thank you. Yeah. Can I invite you to speak? There are people in queue. Okay, anyway, चलिए बोलिए. अच्छा बोलिए, अब आप चलिए, आप ही बोलिए. Please fast. You greed and fear बोलिए ना, please. Please unmute and speak. Actually, मैं good evening शरद जी.
मैं एक चीज पूछना था। अभी इंगर्सल रैंड जो है वो एक्चुअली ऑल टाइम हाई से अभी 250-300 रुपया थोड़ा करेक्ट हुआ है, अभी थोड़ा डाउन जा रहा है, तो वो क्या अभी घुसना वो शेयर में अच्छा होगा क्या? वो भी एमएनसी है, आपको तो पता ही है, तो इसलिए थोड़ा पूछना था। इंगर्सल रैंड में लॉन्ग टर्म के लिए अभी घुसना सही होगा क्या? रुक जाओ ना। सॉरी, समझ नहीं है। मैं बोला अभी रुक बोला उन्होंने। रुक जाओ अभी कौन सा लेवल में आने से मोरलेस घुसना सही होगा शरद जी? अब 3500 होएगा तभी ले लो। 3500 तो इससे ज्यादा ही होगा। अभी अभी तो 2775 2780 ऐसे चल रहे हैं। आपको और ट्रेडिंग करने का है कि इन्वेस्टमेंट करने? नहीं, ट्रेडिंग का नहीं है मेरा, इन्वेस्टमेंट करने का ही है। हाँ तो 100 रुपया महंगा आएगा या सस्ता आएगा, क्या फर्क पड़ता है भाई? नहीं, वो सही है, बट अगर थोड़ा कम कम भाव में मिलेगा तो इसलिए ही पूछ रहा था, और कुछ नहीं। ये आपको इंगरसोल के बारे में क्या क्या मालूम है? नहीं, ये तो एमएनसी है, ये स्पेशलाइज्ड कुछ प्रोडक्ट बनाता है जो इसका काइंड ऑफ थोड़ा मोनोपोली मार्केट है। तो आप थोड़ा अगर इसका बारे में थोड़ा एनलाइटन करेगा तो अच्छा होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। थोड़ा नॉलेज लेना चाहता हूँ आपसे। नहीं, आपके पास नॉलेज है ना कि नहीं यार, आप ले लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है 50-100 रुपया ऊपर नीचे। नहीं, ठीक है शरद जी, आप कंपनी के बारे में थोड़ा अगर नॉलेज देंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। और नेक्स्ट पेज में देना। अच्छा शरद जी, ठीक है, थैंक यू जी। ओके Sir, your view on Sarasa Antreware and Titan for long term. Yes, Namaskar Sarath ji and entire team. Reliance Industries Q1 result आया, मैं स्पेस में लेट ज्वाइन हुआ था, मे बी यू हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। नहीं ठीक है। तो इसमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप कुछ भी देना चाहेंगे सर? वो ठीक नहीं लगा रिजल्ट। ओके सर, थैंक्स अ लॉट सर। महेंद्र जी। Yes. Good evening, Go ahead. sir. Good evening. अच्छा, जो भी सुमित सिक्योरिटी के बारे में बात करें, होल्डिंग कंपनी का, जनरली होल्डिंग कंपनी में जो शेयर होल्ड किए वो कंपनी का आपका कैश फ्लो क्या रहेगा? ओनली डिविडेंड? जो भी कंपनी होल्ड करके बैठे, कंपनी होल्ड कर रही है, वो बेचने के लिए तो नहीं लिया उन्होंने। जब कंपनी कोई अर्निंग ही नहीं कर रही, रेवेन्यू नहीं आएगा तो उसकी वैल्यूएशन नहीं आएगा। तो चाहे 10% डिस्काउंट, मतलब 90% डिस्काउंट हो या 70% डिस्काउंट हो, बट इन्वेस्ट करते से मार्केट में अगर हम आते हैं तो अर्न करने के लिए आते हैं, नहीं कि सेफ्टी ढूंढने के लिए। तो मेरा मानना है कि होल्डिंग कंपनी में कभी भी वैल्यूएशन नहीं मिलता। जस्ट वही कहना चाह रहे हैं। गुड एक्सप्लेनेशन। क्योंकि कभी भी होल्डिंग कंपनी है, उन्होंने तो जस्ट अपना होल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए होल्ड करके बैठे हुए हैं, बट उनके पास जो भी अर्निंग आएगा ओनली फ्रॉम डिविडेंड। अब डिविडेंड का जो भी कैश फ्लो आएगा तो आपको एज अ डिविडेंड ही देगी, ज्यादा और कुछ तो देने वाले नहीं है। उनका कोई ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, तो उसकी वैल्यूएशन कैसे अप्रिशिएट होगा? तो नॉर्मली होल्डिंग कंपनी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मार्केट में अगर अर्न करना तो कोई अच्छी बेटर कैश फ्लो जनरेट करती कंपनी है, रेवेन्यू ग्रो होता है, प्रॉफिट ग्रो होता है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमारा ग्रोथ बढ़े, वेल्थ बढ़ेगी। नहीं कि हम मार्केट में सेफ्टी ढूंढने के लिए आ रहे हैं। अगर सेफ्टी ढूंढनी है तो बेटर है फिर डेप्थ में इन्वेस्ट कर ले। दैट इज ऑल टेक मैन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। लोकेश भाई बोलिए। और लोकेश भाई बोलिए। श्रीकांत मोरे बोलिए। अच्छा, हाँ लोकेश भाई बोलो। हाँ सर, क्या हाल चाल है? श्रीकांत भाई रुक जाइए।
हाँ लोकेश भाई बोलिए। हाँ सर जी ये एसीसी का क्या हाल चल रहा है आपके? एसीसी सीमेंट का। हाँ अच्छा है। अभी जो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बना दिया है ना अभी, अभी आने वाले दिन में एक हफ्ते का एक महीने का अगस्त से एक्सपायरी में क्या हो सकता है अभी? तो आप बोले तो आपको अगस्त के अंत में बोलूं क्या होगा? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यार मैं भी आपको बोल रहा हूँ। अरे मैं भगवान वो थोड़ी है। कल नहीं सब सुबह आप एक्सपीरियंस के बारे में मैं पूछ रहा हूँ तथा आपके अरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। नहीं इसमें एक्सपीरियंस हो या पैसा हो कुछ काम में नहीं आता है। ऐसा वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है किसको कुछ नहीं मालूम। और आपसे दरखास्त है आप इतना लंबा मत सोचो लाइफ में। ठीक है मैं एक महीने के बाद सोच रहा हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप साल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। एक हफ्ते का जो अगस्त की सीरीज में कुछ नीचे आ सकता है या और 20,000 के पार कर सकता है क्या आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? लगता है 21,000 हो जाएगा। अच्छा ठीक और नहीं हुआ तो 18,000 हो जाएगा। दोनों की चांसेस भी है। The question is such, it हाँ requires such an answer only. ओके The forecasting is very easy. हाँ जो भी कुछ भी बोल सकता है। मैं सोच रहा था आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्योंकि अरे भाई हाँ मेरे बोलिए। को ये भी नहीं मालूम है कि अगला मिनट में क्या होएगा निफ्टी। ओके किसी को भी मालूम नहीं है। सही ये तो बात है। ओके थैंक यू सर थैंक यू। और श्रीकांत। हेलो सर आई एम ऑडिबल? या हाँ सर सर मैं आपके कभी कभी स्पेस में आता हूँ आपको सुनता हूँ एंड एज यू सजेस्टेड मैंने वेस्ट लाइफ फूड ले लिया है अभी। तो आई एम न्यू इन दिस ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो अभी सर एक दो ही स्टॉक है लाइक रेलटेल और आपने जो सजेस्ट किया वही सर। और कौन सा आपको अच्छा लगता है आगे? जैसे आपने बोला है एबीपी सीमेंस आपने रिकमेंड किया था एक बार, सो शैल आई गो अहेड विद दोस और या जस्ट योर ओपिनियन? नहीं यही ले ना वेस्ट लाइफ। हाँ वेस्ट लाइफ लिया सर मैंने ऑलरेडी लिया। और ले वो अभी कल परसों ही लिया। और ले वो और लो अच्छा ओके ठीक है सर। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ओके गुड सर। थैंक यू सर थैंक यू। या नवजोत सिंह सलारिया। हेलो सर। बोलो सर ये बीएससी के बारे में आपका क्या व्यू है सर? हाँ बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इन्होंने अभी ऑप्शन भी स्टार्ट कर दिया, मतलब एक नया लेग खोला है अर्निंग के लिए। तो लंबा व्यू क्या है सर इस पे? ऑन व्हाट? इन्वेस्टमेंट के लिए बीएससी पे, अरे बीएससी स्टॉक पे। हाँ समझा अच्छा है। तो बढ़ेगा कि नहीं मालूम नहीं है। ओके शेयर वो अच्छा है बुरा है वो ठीक है। सवाल है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा नहीं, मतलब एज ए कंपनी ग्रो करेगा, मतलब एज ए नहीं आपको नॉलेज है तो बेशक लीजिएगा। विल मेक मनी। ओके बट आई अवॉइड जनरली ऑल सर्विस कंपनीज। ओके दे आर नॉट एनी मनी स्पिनर। इंडस्ट्रियल्स। ओके सर थैंक यू। ओके थैंक यू। Sharad sir, your view on Sarah Sanitaryware and Titan for long term? Which one? Titan. Sarah Sanitaryware and Titan for long term. No, Titan I could understand. Which one?
Sarah Sanitaryware, sir. Other one. वो B group में है. Titan will seek lower levels. Okay, sir. Thank you. Yeah. Sorry. हाँ जी. बाबा ठाकुर. बाबा ठाकुर. बोलो. हेलो सर. हम्म. सर नोवर्टिस 780 आ गया है. और बाय कर सकते हैं क्या सर? हाँ ले. सर नीचे कहाँ तक आ सकता है? डिविडेंड दिया था तो नीचे गिर रहा है. ये आपने एक्स डिविडेंड होगा. यस सर. तो फिर तो वो क्यों नहीं गिनते हो डिविडेंड? यस. तो बाय करते रहे. अरे वेस्ट लाइफ लेना यार, क्या है. ओके सर. थैंक यू सर. भारत. हेलो. हाँ. नमस्ते शरद सर. नमस्ते सर मेरा लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी कोई और क्या है? लार्सन एंड टूब्रो तो बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गया है, बट उससे ही कुछ मिलता जुलता कंपनी जो सारे इंजीनियरिंग या जैसे आप बोलते हैं इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स में. I think I can't hear anyone. No, we can hear Surrender. Okay, I'll have to exit and then come back. Yeah. सर लार्सन के बाद सेकंड नंबर पे जो जिसको हम देख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म और खरीदने की व्यू से. हाँ. तो वो ऐसी कोई इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में सर आपसे पता करना था. आप जैसे इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग कंपनीज के बारे में रेकमेंड करते हैं, जैसे आपने पहले एसकेएफ बताया था और एआईए इंजीनियरिंग शायद बताया था, तो इसी तरीके से मुझे लार्सन का कोई सेकंड मतलब सब्स्टिट्यूट अगर आप सजेस्ट कर सकें तो. लार्सन का सेकंड या थर्ड या फोर्थ सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है. ओके सर, थैंक यू. और सीमेंस का सेकंड थर्ड फोर्थ सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है. एबीबी का नहीं है. जो भी आपको पसंद आवे ले ना सर, क्या है. ओके सर, थैंक यू सर. शरद जी, एक क्वेश्चन आपको मुझे पूछना था अराउंड अरविंद फैशंस. Overall government policies regarding the textile industry is coming up with these special zones and etc. And then I believe the largest player will gain from those policies. So is there any view on this particular stock, Arvind Fashions? No dear. No? No big group. वैसे आप इस कैटेगरी में बाकी स्टॉक्स देखेंगे तो सब में एक्यूमुलेशन हो रहा है. डिलीवरी डेटा देखेंगे तो कुछ तो है उसमें, अब क्या है पता नहीं. एंड समथिंग इज हैपनिंग देयर. As far as news are concerned, right? So I think a year back there were 7 special textile zones are supposed to be created by the government, and that should be the export oriented ones, and I believe it will be in the same kind of facilities that IT industry gains from the SEZ, and that's where people are excited about it. अब भाई साहब, ये जो आप टेक्सटाइल का बोलते हो, if I were you, I will buy only one company, Vardhaman Textile. Right. Bluest of the blue chip. सब कुछ है, यान है, गारमेंट है, सब कुछ है, और माँ भी है उसके पास. बढ़िया है. Right. Okay.
Thank you, sir. Thank you. Good evening, sir. Yes. Sir, do you have any view on advanced enzyme? No. No B group. No B group. Okay, sir. Thank you, sir. बोलो. सर मैं बात करूं क्या? हाँ करो ना. हाँ सर, ये रेमंड के बारे में आपकी क्या राय है लॉन्ग टर्म के लिए सर? नो बी ग्रुप. रेमंड सर? हाँ बी ग्रुप है, ये ग्रुप वो थोड़ी है. सॉरी सर, थैंक यू. Paras? बोलो भाई, कोई तो बोलो. सर पूछ लिया, मैंने पूछ लिया. Okay. Issue? सर ये दास भाई बोलिए. Hello, sir. I'm listening you to some like since last 1.5-2 years. आपने बहुत बार बोला कि after 15th of month, the options become cheaper, especially stock options. So, sir, how to play these options in earning season? If you can add some comments, especially in earning season where volatility is high due to earning. So if you know the date of the earning and you have a fair idea whether the results will be good or bad, you can play accordingly. You can buy a. Okay, so suppose on 27th, SRF will be reporting their earning. So, if you can give example. No, why take the last date only? Take for example Tata Consumer. It is on the 26th of the month. So I feel the results will be bad. So I'll buy a put. And if I feel the results will be good, I'll buy a call. They are damn cheap, damn cheap. Exactly. True. And one last thing, you always mention about mentor, how it is important for trading journey. So, how to find one, because it's difficult to find a mentor. So, if you can also add about that. Where do you stay? In Gujarat, Ahmedabad. Oh. क्या करे mentor के लिए? My number is on my profile. You give me a buzz. We'll speak. Sure. Thank you very much. Chalo, bhai. Who's next? Hello. Yeah. Sir, I just want to ask, Namaste sir, I want to just ask about the Nifty view. Nifty view is very good. It will go up a lot. And suppose if by chance if it doesn't go up, it will go down a lot. ये मेरा व्यू है. ठीक है सर. अरे कोई निफ्टी पे व्यू देगा ना. हाँ सर. उसका पाँव छू लेना भाई. एस्ट्रोलॉजर होगा बहुत बड़ा लाइफ में. Sir, I want to ask you one more thing about Nifty. हाँ बोलना भाई. सर ये जो लोग जो बोलते हैं कि जो ब्लैक मार्केट में जो चलता है इंडिया में, वो उसका पोजीशन इफेक्ट करता है क्या सर अपने निफ्टी के? वो जो लोग 100%. सर तो फिर जो मैंने जो अपने जो एक दो लोगों से सुना है कि पीपल आर हेवीली शॉर्ट, इसलिए मार्केट नहीं गिर रहा है. Yes, 100% correct. Sir, and people are long on futures, stocks, and short on Nifty. Yes.
सो दैट्स द रीजन कि बोला जब तक वो पोजीशन खाली नहीं होती तब तक अपना मार्केट को पकड़ के रखेंगे. नहीं, in the beginning of the space I said that only. वही मैंने बोला कि शॉर्ट है बहुत. सर तो फिर मैं तो कुछ लोग को ऐसे भी जानता हूँ जो 17,000 से शॉर्ट अभी तक पकड़ के रखेंगे और बोलते हैं कि अगर 21,000 भी चला गया तो भी पकड़ के रखेंगे. ठीक है ना, ये शेयर बाजार में जात जात के आदमी लोग आते हैं, सबका व्यू रहता है, सबके पास पैसा होता है और वो बहुत सारे लोग के पास माँ होती है, समझा? हाँ सर. तो वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं सर. तो लेकिन इसका मतलब तो फिर यही हो गया कि आप नॉर्मल रिटेल लोग अगर उनको लग रहा है कि सब कुछ खराब है, शॉर्ट कर रहे हैं, तो वो कभी कमा ही नहीं सकते. इसका मतलब जो मार्केट चलाते हैं सिर्फ वही जिंदगी भर कमाएंगे. हाँ ऐसा ही है ना. मेरा हालत भी वैसा ही है. मैं भी रिटेल पूरा टाइम पैसा खोते रहता हूँ, ट्राई करता हूँ. तो फिर हम लोग फिर भी जिंदगी भर ट्राई करते रहते हैं और उनको पैसा भरते रहते हैं. ये टेगा इंडस्ट्री कैसा रहेगा सर? बैठना रहेगा या निकलना? टेगा इंडस्ट्री. टेगा क्या माल? थैंक यू सर. सर आपके हिसाब से सबसे ओवर वैल्यूड स्टॉक कौन सा है इस टाइम पे? यस सर. टेगा इंडस्ट्री का बताएंगे सर? नहीं सर, टेगा नहीं मालूम है. बी ग्रुप के बारे में क्या बता रहे सर? 4,000 कंपनी है. हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू नो ईच एंड एवरी कंपनी? माय फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू फ्यूचर्स राइट. सर आपने ओवर वैल्यूड कौन सा बोला? एसआरएस? एसआरएफ. एसआरएफ. ये आपने क्यों पूछा भाई? नहीं सर, बिकॉज आप पूरा ट्रैक रखते हो ना, कौन सा कंपनी खराब है, कौन सा अच्छा है, और देखा था आपको क्या लग रहा है इस टाइम पे सबसे ओवर वैल्यूड कौन है? ऐसे तो आईआरसीटीसी है, जुबिलियंट फूड है सर, अब बकवासी है. इंडियन. हाँ बोलिए सर. हेलो. हाँ मुकेश भाई, हाँ बोलिए बोलिए. सर कोई 4 या 5 स्टॉक ऐसे हैं लॉन्ग टर्म के लिए आप रेकमेंड करें फॉर 2-3 इयर्स? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं. वो मेरी टाइमलाइन पे लिखे देख लो ना यार. अच्छा ठीक है, थैंक यू. डबल ए आशिक. थैंक यू. शरद जी नमस्कार. नमस्कार. वैसे हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा खराब है, नेगेटिव में, लेकिन मेरे पास बहुत सारा वो आइडिया सेलुलर है जो वोडाफोन आइडिया है, मेरे पास अच्छा खासा पोजीशन है उसमें. तो क्या सोच सकते हैं और जमा करें? आइडिया टेलीकॉम. क्या बोले यार? कुछ तो बोलिए. Srini, you take it. चल, it's been a while. You are not spoken. शरद भाई आपने ट्रैप कर दिया because I put the laughter emoji. Ashish ji, I still wanted to. No. I know Ashish ji, it's the third player in the. Yes, I understand. मैं समझ रहा हूँ सारी बातें. जी जी. In a brutal industry. तो मतलब why would you? That's my take. हालांकि थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया. नहीं, आपको जिंदा आदमी ढूंढना है, आप चलते फिरते आदमियों में ढूंढोगे. आप मॉर्ग में जाके मुर्दों में थोड़ा ढूंढोगे कि भाई शायद इनमें से कोई जिंदा है. That's not how. What I've heard from stock market investors, they look for players who are doing well and likely to do better. Okay, thank you. That's the simplest theme. I'm not a stock investor expert, but जो भी मैंने learn किया है from these spaces, शरद भाई, everybody else, look for good companies who are doing well. Okay, तो इसको छोड़ देते हैं. हालांकि अच्छा खासा पोजीशन है. ये रेलवेज में IRFC बोल के एक है, तो मैं घुसना चाहता था.
आई एम नॉट, मेरा पोजीशन कुछ नहीं है, लेकिन मैं घुसना चाहता था किसी भी रेलवे स्टॉक में। तो IRFC जो थोड़ा सा समझ में आ रहा है, तो क्या सलाह देते हैं? एटलीस्ट इस पे कुछ बोल दीजिए शरद जी। नहीं, अभी वो किसी को मैं वो पूछा कि सबसे ओवरवैल्यूड स्टॉक अब कौन सा है, तो मैं बोला SRF, IRCTC, पिज्जा। अब भाई साहब, आप है ना, ऐसा इन्वेस्ट करोगे ना, आपको मुनाफा होने का चांसेस बहुत कम है। वो कोई एक्सपर्ट को पूछिए। हाँ, इट रिमाइंड्स मी, दिस इज वन फील्ड where everybody thinks he's an expert and he knows everything. A player who's playing Nifty, Bank Nifty, stock, a person who is buying any option or any stock, anything, everybody thinks he or she knows the best and nobody is better than. Now, this is the mindset of almost everybody. And that is why you find nobody making much money. If you remove this thought from your mind that you know everything and you put in a thought that you are a student, you don't know nothing, then and then asking the teacher and doing things will make you money. A teacher is a person who has some experience, but a teacher also doesn't know everything. But he knows much more than you know. So you are better off with the teacher. Earnest request to everybody, please, if you have any notion that you are an expert, you can move the market, you can do this, you can do that, please remove it from your mind. You are nobody in this market. This market is 300 trillion rupees. What you are a speck, you are nothing actually. So don't feel very important and say मेरे को ये है ना, मेरे को वो है ना, कुछ नहीं है भाई, मैं भी कुछ नहीं हूँ, आप भी कुछ नहीं हो। और moral, always go to a teacher. And again I am saying the teacher also is not 100% equipped, but he is somewhat more equipped than you are. So you will be better off. So always take good advice, listen to people, don't berate people, don't insult them just because their view is different. That's it. Yeah. आशिक भाई बोलो। जी जी, थैंक यू। तो मैं वही दोबारा उसी पे, वो रेलवे में एक स्टॉक लेना था, तो वही IRFC के सोच रहा था, अगर आप कहें तो। हालांकि मैं IRFC, जी जी, हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। So can you share your view on LIC? LIC? Yeah. क्या मिलेगा रख के? What will you want? So मैंने उसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखा, मुझे 150% दिखा। एंड उसका इक्विटी पोर्टफोलियो जो है, मुझे लगता है कि वो थोड़ी उसका है, वो तो वो पॉलिसी होल्डर का पैसा है। First you understand what is insurance, then you understand their balance sheet. ROI मत गिनो, ये पूरा पैसा उसका नहीं है। सर और इतना सारा
इंडिया में इतना सारा अच्छा अच्छा कंपनी है, क्यों जाते हो ये सब में यार? गवर्नमेंट में क्यों जाते हो? Thank you. Okay. People who have finished their questions, if you can please drop off. There are other people in queue. Yeah, hi. I have one quick question, which is that a few years ago there was a change in the way PE is calculated for the Nifty. So we moved to consolidated PE. Is there any source where it is possible to compare how the current PE would look like if we were to revert to the original methodology, a standalone PE? Rohit, any idea? Rohit, maybe you might have some idea. No, I don't think there is any data source for doing that, or I don't know if anyone who's backdated it. Ideally, I would do backdating of consolidated so that today becomes comparable with the past. Because the I find that PE is really misleading. I remember that when the methodology was changed, immediately the PE dropped by almost 20-25%. So if you look at current PE, by if you just extrapolate it simply, the current PE should actually be about 25% more compared to what it is right now. But that may not be true because a lot has changed. Yeah, which is why I said I would like to change historical rather than change the current to historical, because I think for more than a decade we've been hearing about companies having subsidiaries, which results in consolidated earnings being higher, and all analysts started to report consolidated earnings. So then it was probably ideal that we moved towards that methodology, and unfortunately they don't backdate it, so they should have given a backdated PE for consolidated to make it comparable to previous periods. But I haven't really seen that. Most analysts who maintain their own PEs, they maintain forward. So that way you do get a comparison. If you get any research report from some of the broking houses, their market outlook reports often have a forward PE chart, which they maintain, which therefore has its comparable history. I think Bloomberg probably would have a forward PE chart or something like that if somebody uses. But I'm not sure whether consolidated is available in the same format. Thank you, everyone. Puneet, you have something to say? Hey, शरद सर प्रणाम सर। अशोका लीलैंड के बारे में क्या व्यू है? सर आप म्यूट पे हो। Hello, am I audible? Yeah, you are audible. He may be शरद away. सर म्यूट पे हैं। He may be away for a minute. So earlier during the call, and you can rewind and hear it, he had mentioned it's a good pick. I'm not. I mean, you can just go back. Maybe it was in the first. I joined a bit late. Yes, I joined a bit late. It was there in the first half hour of the call, so you can rewind and take his check the views there. Okay. William? The view on Max Healthcare. Yeah. Hello. Sharad sir. Sir, good evening. Good evening. Sir, I wanted your view on Nifty. What I see is last 4 weeks,
It has gone up almost 1,000 points, and when I look at the weekly chart, it is showing all the green candles. Similar pattern I see last year also, wherever it has gone up weekly 4 times, 4 weeks continuously, it has corrected. So, wanted your view for next week. Can we see some major correction in Nifty? Actually, I am not equipped to answer this because I don't know anything about Nifty. Mr. Anand will take this or surrender. Still, you go ahead and take it. It's not there. Rohit bhai, you take it. See, I'm my overall sense is probably not for too much of a pullback. Worst case, if it does in the short term, since you're asking 1 week only, uh, is like around 650 or 550 is yeah, I think 650 is my worst case. 19650. I'm not able to see right now much below that. Eventually, I think you will head higher again. Longer term, last time I was having a discussion with Anant that 19900 is where most eliticians will have a cutoff for any kind of bear market rally view, which may be hanging around that, oh, this is a topping pattern or it is overdone. Because once you cross that, then it is no more possible to keep those kind of markings on board. Correct. After that, it will be something which will be bullish for a 1-2 year kind of a time horizon. Mm-hmm. But again, coming back short term, till there is a clear cut sign of a trend reversal, I wouldn't really look for a reversal, because a strong trend sometimes just keeps extending on rotation. Correct. Okay. So in this context, I also wanted you to pitch in for the Bank Nifty. While they both were going kind of together, but I think last couple of weeks there's a diversion between Bank Nifty and Nifty. There's kind of erratic behavior in Bank Nifty. Even today also, if you look at it, it was kind of sustaining. So what is your take on Bank Nifty? No, so this is a general rotation. Like, say, if we just go back a few weeks also, when Nifty was 18,900, the Nifty only corrected for 1 week, Bank Nifty corrected for 3 weeks. And in fact, Bank Nifty is giving more decent pullbacks, and then it rallies more stronger. Exactly. Yes. So the same thing we saw even a week or so back, where Bank Nifty pulled back for 3-4 days and Nifty hardly did. And now it is again going up stronger. So Bank Nifty in a way is leading the way in that sense, but also pulling back and being more constructive. And why the Nifty doesn't do that is because there are different sectors also. So there's, like, for example, auto stocks. Auto sector last 5 days was down. And so it managed its correction. Now the auto sector starts to pick up sort of today. So this sectoral rotation ensures that the Nifty itself doesn't see a meaningful pullback. I see. Okay. Makes sense. Correct. No, but William, I have Yes, a sir. question for you. Why would you break your head over a product which is so volatile in nature and not talk about stocks? Sir, actually, I'm just trying to learn option trading, and last few months I've been studying both these things. So I just wanted to get understanding about how these two behave. Yeah. And the day you learn, 3 months, you will be out of the market. No, sir, just learning. I'm not like But why do you want to learn? Why don't you learn how to eat cyanide? That would be better option for you. Don't learn such things. You should not learn this. This is a temple
or a church where you buy good shares and go to sleep. ये ऑप्शन सब मार्केट वाले के लिए है. I challenge you, if you make any money, I will give you a trophy. Sir, you are our guru. No, I so understand. I'm saying no, don't play this. Don't think of it. Okay. Thank you, sir. Sarvendraji, you were saying something? No, I had a question for Rohit. Usually, earlier, when we used to count, we used to look for a B wave till 1.618. 1.618. Now, this time, I think we are discussing a level of 19,900, which is 1.3, which is 1.38. So, I was just thinking, what has changed? No, so fair question. Usually, I mean, if I go by what is written in Elliott Wave Principle, he talks of 123 and 138. He doesn't quote 161. In my observation, though, shorter to medium term charts, 138 works pretty well. When we are looking at slightly longer term charts, I have seen it extend to 161. So if you say we should wait for 161, given that this is a larger B wave, it is also fair that you can get an extension to 161 and things can still go wrong. So this would probably be one major invalidation. 161s have happened, but they are rarer than 138s. Like even say for example, if I take Dow Jones 2000 to 2008 entire fall and then bounce back to a new high was 138 or slightly more than 138, but it didn't go to 161. So there can be that variation. But yeah. Fair. No, I was just trying to understand your counts because I never count beyond 138. You know, I also don't consider beyond 138 in medium term charts. So 161 only in very long term. If it's like a 5-year chart पे B wave mark कर रहे. So rarely in few charts I have seen 161. Otherwise mostly 138 पे invalidate हो ही जाता है. So therefore I would invalidate at 138 and then देखेंगे. वो बहुत rare case है. Yeah, fair. I usually never take beyond 138, so I was just worried. I was just curious. Since you are taking this time 138, I thought any special reason for that? No special, nothing. No, I got it that on a shorter term that 138 is good enough, and on a longer term you might take an exception, possibly. Yeah, and those are also rare, so it's not, you can't always do that. Sharaji, Hertz had asked about Max Healthcare. And Ronak, if you are done, if you could just drop to listener, please. It's good. Max Healthcare is good. Okay. Thank you. Thank you, sir. Narayan Vidyalaya, Fortress. शरद सर, हेलो, आवाज आ रही मेरी? शरद सर, जो आपने जो वेस्टर्न लाइफ का बोला अभी, वेस्टर्न लाइफ डेवलपमेंट के शेयर्स के बारे में, मैंने ना बहुत बार ऐसे देखा है कि मतलब जो इन्वेस्टर्स है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है तो डोमेस्टिक की बढ़ रही है और फॉरेन की कम हो रही है. इसमें मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार. अभी इसमें अपना जो वेस्टर्न लाइफ में देखो, प्रमोटर की होल्डिंग 1% जस्ट डिक्रीज हुई है और म्यूचुअल फंड की बढ़ती जा रही है और डोमेस्टिक की कम होती जा रही है. तो उसमें कंफ्यूजन होता है. तो क्या व्यू रहता सर? आप मतलब बोलिए. आप शेयर होल्डिंग पे से कंपनी का फ्यूचर निकालते हो क्या?
नहीं, मैं अभी उसमें लर्निंग ही कर रहा था, तो वो एक पार्ट है ना लर्निंग का, तो उसकी वजह से मतलब देख रहा था कि आप वैल्यूएशन तो निकालते, लेकिन उसमें भी ये भी देखना पड़ेगा ना, और प्रमोटर स्टेक प्लेज कर रहे हैं या क्या, मतलब वो भी मैटर करता है ना, बहुत बार सुना था। सच्ची बोलो ना सर। मेरे पास बहुत शेयर है। अच्छा। लेकिन आज ही पहली बार आपके मुंह से मैंने सुना, मैं देखा नहीं है। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, और प्रमोटर बेचे डीआई बेचे लेवे, अपने को क्या लेना देना है भाई। अच्छा। अपने को देखना है कि कंपनी का वर्किंग अच्छा है, ये आपने है कि नहीं, बस। अच्छा, अर्निंग। ओके। और आउटलुक अच्छा है कि नहीं, बस। ओके, तो आउटलुक को किस तरह से देखे सर, मतलब उसमें मैनेजमेंट का आउटलुक क्या क्या बोल रहे हैं एग्जैक्ट? नहीं, मेरा आउटलुक। अच्छा। ये बर्गर खाने का 100 साल के बाद भी रहेगा। राइट। बस सिंपल। अच्छा। अच्छा, बिजनेस। वेरी सिंपल। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। उसमें ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था, बस कर दिया आपने डाउट क्लियर, तो अच्छी बात है। बिजनेस का व्यू देखना है। और एक थैंक यू सो बात मच। बोलता हूँ, बोलो ना सर। ये जितना भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, ज्यादातर somebody has told me, okay, and I have followed them blindly. मतलब बिजनेस के जोर पे बस फॉलो कर दो, व्यू देख के। जैसे आपने बताया कि ये अच्छा है, ले लो। ऊपर ऊपर से देख लेता है मैनेजमेंट को और प्रोडक्ट को, बस खत्म। अच्छा। अब 5 मिनट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यस और नो। यस सर। ओके। Sir, I have one more question regarding one stock, Craftsman Automation. So, waiting for your view. Prakash. Hertz. Yes, sir. Craftsman Automation. Your view. Yogendra. Sir, Craftsman Automation. कोई नहीं है। शरद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है ना। हर्ट्स ने अभी पूछा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के बारे में। नहीं यार, अब बी ग्रुप नहीं मालूम। ओके, परेश। शरद सर, टाटा स्टील या टाटा मोटर में किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? 2-3 लाख मेरे पास एक्स्ट्रा में अभी एफडी खुला है ना, तो वो इन्वेस्ट करना है। वेस्ट लाइफ ले लो। वेस्ट लाइफ ले लो। ओके, थैंक यू। पुनीत, यू हैव समथिंग टू आस्क? मैंने वो पूछ लिया था सर से, अशोका लेलैंड वाला। हाँ। सर आप म्यूट पे थे। एक दूसरी चीज और भी थी कि मेरे को मैं आपको पिंग करूं क्या सर मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए? मैं आपको कल सवेरे करता हूँ सर। योगेंद्र। थैंक यू। Yogendra, you have something to ask? आशीष जी। या गुड इवनिंग सर। अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में पता करना है सर, आपका व्यू सर।
No B group. Okay, sir. Thank you. Amen. Amen जी. यस सर, बैंक ऑफ इंडिया के लिए व्यू चाहिए सर. हेलो हाँ भाई. सर, बैंक ऑफ इंडिया के लिए आपका व्यू चाहिए सर. अच्छा है. ओके. कपिल जी. आसिफ जी. Namaskar, Sharad sir. Basically, I'm from medical background. I'm an allopathic practitioner. I want to enter in finance world. I'm learning regarding about the technical analysis and fundamental analysis also. What should be more Unmute yourself. priority given in or fundamental or technical? Fundamental. Okay, sir. Thank you. Sir, your views on and Tech Mahindra and JSW Steel. All are good investment. Not Thanks a a lot, good sir. in. सुभाष. नमस्कार सर. नमस्कार. सर तेजस नेटवर्क क्या व्यू आपका? बहुत बढ़ेगा. लेकिन रिजल्ट तो बहुत खराब है इस क्वार्टर का उसका. बहुत बढ़ेगा. सर रिजल्ट देख के तो नहीं लग रहा है सर. आज क्या भाव था? आज का मेरे ध्यान नहीं है अभी. माइनस में ही है 845. हाँ तो अब इस बेस में बात करेंगे. ठीक है सर. आकाश जी, आपको कुछ पूछना है? सर मेरी पीएनबी में होल्डिंग है, आपका क्या व्यू है इस पर? अच्छा. ओके सर. परेश जी, you have something to say and ask? नहीं सर. अच्छा, जरा प्लीज लिसनर पे ड्रॉप कर जाइए. काफी ओके ओके सर. हाँ हाँ. योगेंद्र जी. खादिर जी. हेलो हाँ बोलिए. सर, कपिल, आई एम ऑडिबल? या यू आर. हाय सर, शरद सर, गुड इवनिंग सर. आज सर मैं कपिल गुड़गांव से. मैं एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने और लास्ट 1-2 बार भी मिस कर दिया. सॉरी फॉर दैट. सर मेरा वो क्वेरी था एक, क्योंकि मैं गुड़गांव रहता हूँ. सिर्फ एक पर्टिकुलर एक सेक्टर पे और एक स्टॉक पे, यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवल्स पे. सर फंडामेंटल्स और जिस तरह मैं गुड़गांव रहता हूँ, माई गुडनेस सेल्स होती हैं यहाँ पर. मतलब कोई बिल 40,000 का बनता है, कोई 20,000, लाइक मतलब टू मच.
अब गुड़गांव में होती है, ऑल ओवर इंडिया तो मेट्रोस में होती होगी ऑफ कोर्स। जो रिजल्ट्स आए हैं, जो जिस तरह लास्ट 1 से 2 महीनों में परफॉर्म किया है, तो सर आपका सजेशन, अगर मैं इसको स्लोली एक्यूमुलेट करूं, बीइंग इसका कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो चेंजेस हुए हैं, जो जिस तरह टीवी में बताते हैं, और स्टॉक प्राइस इस टाइम सर इन्वेस्ट करना फॉर कपल ऑफ इयर्स आप कर रहे हैं सर। यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवल्स। अच्छा है सर आप, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, रियली अच्छा है यार। आप सरकाज़म में तो नहीं बोल रहे? नहीं, एमएनसी एमएनसी है, यस, क्योंकि आपका फोकस ऑलवेज ऐसे रहता है एमएनसी, तो रियली थम्स अप। रियली थम्स अप। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स। योगी जी। इंद्रदीप जी। थैंक यू सर। सर मेरा 2 क्वेश्चन है सर। सर डिफेंस सेक्टर में सर आपका व्यू क्या है, जैसे वो हेल और कोचिंग शिपयार्ड या माजगांव डॉक, और एक सर डीएलएफ के बारे में सर क्या राय है, थोड़ा बताएं तो। अच्छा है लियो सर डिफेंस सेक्टर सर। सर डिफेंस सेक्टर ओके सर ना? पता नहीं यार, वो सी 90% गवर्नमेंट के पास है। फ्लोटिंग स्टॉक है नहीं, कुछ भी भाव हो जावे तो ऊपर में चिपक गया तो चिपक गया। काई को जाता है डिफेंस में फालतू। ओ सर, दिन कौन सा मतलब किस में जाना चाहिए सर? आई थिंक आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन ऑन शरद जी's behalf। शरद जी अभी इस पिछले 2 घंटे में कई बार बोल चुके हैं। वो सॉरी या हाँ, उन्होंने अभी अभी भी रिसेंटली बोला, उन्होंने बोला वेस्ट लाइफ। ठीक है, आप अगर ऐसे पूछेंगे तो उनका एक ही जवाब होगा। तो एंड आई थिंक ही आंसर्ड योर डीएलएफ क्वेश्चन आल्सो। yes it's good for DLF, right sir? See, keep one thing in mind. There are too many good shares. No two doubts about it. But investment in those shares is good or not, that you have to decide. Company A is good, company B is good. Now you have to decide which company will give you more return. Right sir. Because you are not buying because you love that company. You are buying to make a buck. And you have to assess which company will give you the maximum return. So you have to select and play. Okay sir, okay, thank you for this opportunity, thank you। MK बोलो। बोलते नहीं हो भाई साहब। MK एम कादिर नहीं बोलेगा। अब पुनीत, you are done. ईशू सर वरुण बेवरेजेस पे क्या व्यू आपका? ठीक है, बहुत महंगा है अभी। काफी महंगा है, आधा हो जाना चाहिए।
नहीं वो सब बी ग्रुप में पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर में आवे तब पता चले। और इंडिया बुल्स हाउसिंग बकवास। थैंक यू सर। Now, Chirag, don't approve any request. We done with the request. Right, sir. Now we'll ask Abad Anand to take over. गुड इवनिंग। वाह 2 घंटा हो गया। आप अरे यू रियली हैव सम पेशेंस शरद भाई, कैसे कर लेते हो इतना। ओके, कमिंग बैक टू द बेसिक क्वेश्चन एवरीवन इज हैविंग। 2 days I had one trend change day on 18th or 19th which is just shifted by 1 day। मेरे हिसाब से इधर एक टॉप लग गया। वी आर नॉट गोइंग टू सी 20,000 एट ऑल फॉर अ लॉन्ग टाइम। Number one. Why? Because there are many astrological ones which I am looking at, plus the in spite of जो रोहित के साथ में लास्ट पेज पे डिस्कशन हुआ था, मैं 19,750 पे छोड़ दूंगा, 740 मेरा टायर था, वहां पे एक बार के लिए छोड़ा। But then when it was closing near 20,000, looking at the way it was doing, I said this is not going to hit 20,000 and I in fact live stream में भी बोला था कि ये खत्म हो गया। I would rather go short. I'm going home with puts, and which is what I did. I still am holding a lot of puts. Number 3, इधर जो टर्न अभी अभी मिला है at 19,991, ये कई सारे पैटर्न्स का एंडिंग है। तो वो कैसे कैसे होता है एक समझा देता हूँ। वी हैड वन रैली विच स्टार्टेड फ्रॉम 18,600, दैट रैली एंड्स हियर। तो ये पैटर्न, एक पैटर्न इधर खत्म होता है एंड ये पैटर्न खत्म होने से इसका पहला टारगेट आता है 19,200 और 19,200 अगर तोड़ा तो स्ट्रेट बैक टू 18,600। बट ये पैटर्न खत्म करने से जो 16,800 से जो पैटर्न चला है ऊपर तक, जो 16,800 पे मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था 19,200 19,400 आएगा, एंड दैट इज डन एंड लिटिल मोर आया, वो पैटर्न भी खत्म हुआ है इधर। तो इसके पैटर्न के बेसिस पे अगर ये जो 3,000 पॉइंट बढ़ा है, ये 3,200 पॉइंट जो बढ़ा है, इसका करेक्शन अगर देखो तो इसका करेक्शन आता है 18,600 पे। So there is a high degree that it will come to 18,600. Now what happens if it comes to 1,800? Now here is the big if. If it comes to 18,600, निफ्टी वुड हैव जो ट्रेंड लाइन बना है अक्टूबर 21 से लेके दिसंबर 22 का जो ट्रेंड लाइन जो बना है उसके नीचे आ जाएगा। Once it comes back within that trend line, then another pattern will end, that is which is started from April 2021. Now इसका करेक्शन स्ट्रेट अवे अगर ये पैटर्न खत्म हुआ है तो टारगेट आता है 14,200। That will again kick in another pattern which started at 7,511. अगर वो पैटर्न खत्म हुआ तो इसका टारगेट आएगा almost till 10,700. So at this point in time it is difficult to give a target at as such a deeper target, but the first target for me is 18,600 and Nifty 18,600 लगाएगा। Why? Because if you notice from the bottom, there is a doubling of the 54 days time cycle which I talk about for Nifty. It has done exactly that in about 110 days, plus or minus 1 or 2 days doesn't make a difference. So that cycle has ended. So ये opposite side में चलना चाहिए roughly about 54 days, which will take us almost end of August or first week of September तक. So if there is a downswing for such a long time, there is a deeper retracement expected in the market. Third thing, if you notice or study all the Nifty 50 charts जो मैं study कर रहा था 2 दिन से, Nifty 50 charts में बहुत सारे stocks जो है
they are showing a topping pattern. If you want, I will start giving off the names, but I don't want to get into the individual stock because there are quite a few of them, and many of them have finished their long-term targets or long-term patterns. So those patterns, their targets are looking very bad. They're not looking very healthy at all. दो तीन का तो नाम बताओ भाई. अरे दो तीन का नाम, सबसे पहला तो इन्फोसिस है, दूसरा है टाटा मोटर्स, तीसरा है आईटीसी. फ्रंटलाइनर्स है, बहुत सारे फ्रंटलाइनर्स है जो खत्म हुए. एचडीएफसी इज लुकिंग वेरी वीक. एचडीएफसी इज गोइंग ऑलमोस्ट अप टू 2000 रुपीज एंड इवन लोअर. देन देर इज आईसीआईसीआई बैंक. आईसीआईसीआई बैंक में बस और एक दो दिन का बाकी तेजी बाकी है, विच विल होल्ड द बैंक निफ्टी. आफ्टर दैट आईसीआईसीआई बैंक शुड हेड ऑल द वे अप टू 600. बहुत गंदा गंदा पैटर्न खत्म हो रहा है, बहुत लंबा पैटर्न खत्म हो रहा है. सो आई एम वेरी कॉशियस राइट नाउ. आई वुड से आईसीआईसीआई बैंक 900 का टारगेट लेके चलो, तो 900 का टारगेट मतलब 10% तो निकाल देगा. सो ये 10 करके बहुत सारा निकालेंगे. प्लस रिलायंस लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर आई हैड सेड 2900 का मेरा टारगेट है. तो इफ यू कैलकुलेट यस्टरडेज रैली ऑफ 40 रुपीज, we went up to 2900 and today we gave up completely on Reliance, and Monday morning Reliance will give again another 3-4% off, so it will go deeper, and this is not waiting here. So looking at all of this, बहुत deep retracement है. TCS is also gone. Then there is Wipro, which UPL, which is ready to break its shelf of support. Then there is Ultrasemco, which has put in a top and turned. बहुत सारा है, लिस्ट बहुत लंबा है जो गिरने वाले हैं, बट मोटा मोटी इसका इफेक्ट आएगा निफ्टी पे. नाउ कमिंग बैक टू व्हाट डू आई एक्सपेक्ट नेक्स्ट वीक. Most probably next week I am expecting 2-3% correction on a single day, probably Monday, probably Tuesday. By end of the week, I will not be surprised if Nifty is testing 19,000. तो एक्सपायरी थर्सडे को है ना, थर्सडे तक 19,000 टेस्ट कर सकता है. That is the most likely possibility because the turn, the point at which जो जहां पे आया और जहां पे पैटर्न जो बनाया, it was very interesting. Plus आज और एक दिखा रहा था, अगर आप ट्यूसडे से आज तक का चारों बार को कंबाइन करोगे, ट्यूसडे का क्लोज था सेम आज का क्लोज 787, एंड टुडेस क्लोज इज आल्सो वेरी क्लोज टू इट, 745 आया है, but I was expecting 787. You blend these four bars, it looks like a classic doji at the top in these four bars. So what I am expecting, जैसे 688 के नीचे जाएगा, 688 के नीचे जाते ही ये चालू हो जाएगा टू द डाउनसाइड टू टेस्ट 19300, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली चालू हो जाएगा. So and this should be taken off within this week easily. बस बहुत वीक है मार्केट, लग रहा है बहुत स्ट्रांग है, but that inability to hit 20,000 is very, very, very important because there is a lot of people whose margin calls will be called. Positions बहुत बड़े हैं. So looking at the larger picture, I am looking at least 18,600 right now. And longer term मेरा वो 14,200 का टारगेट तो वो अभी तक फिल नहीं हुआ, वो फिल होने तक तो आएगा ही. Any questions? I am open. आवाज नहीं आ रहा है. I can't hear Sharad bhai. Anybody can No, No, Sharad bhai, your voice is getting clipped. Like we can't hear you. absolutely no voice at all. We can't hear him. Maybe he should join back or something. Now, just a little more thing to add.
For those who follow RSI, Nifty has been putting in a lot of divergences. Now, this is a classic divergence that you see here this time. Now, what happens with this divergence here that you see classic is when you look at the pattern, by the time Nifty continues selling for one more day from on Monday, the problem here will be that the RSI will not get into oversold zone until market goes and hits 18,600. So if you know how the RSI is calculated, you can understand and you can forecast where the RSI is going to hit the level. So when RSI hits 14,600 is where 18,600, when Nifty hits 18,600 is where RSI will get into the oversold zone. That should be the only time some semblance of real buying should apply should arise. Till then लगता नहीं है ये market रुकेगा. ये market एकदम ओवरहीटेड ऊपर गया है, ओवरहीटेड वो पोजीशन बैलेंस करने आएगा ही नीचे. दैट इज माय व्यू. भाई मैंने इतना डरा दिया कि सब साइलेंट हो गए. नहीं I don't know. सर्वेंद्र जी, do you want? मेरे को तो लगे सैटरडे को ही बाजार घुस जाएगा. मेरे को तो सर्किट लग रहा है. सर्किट के लिए तैयार है. Yeah, Sharad bhai. Chirag, you tell him to speak. Yeah, so, yeah. Can you hear me? Hello? Yeah, we can hear you, Sarvendra bhai. Hello? Yeah. So my I can add to little. I can add. Yeah, I can hear you. Yeah, I can hear you. So I'm saying to add to the Nifty whatever points. No, Sharad bhai, should I let me complete? I think किसी को आवाज नहीं आ रही है. Happy Someone can बोलो. Sharad bhai, Sarvendra is talking. नहीं ये ट्विटर का glitch है. So what I want to add for whatever everything has been said कि भाई देखिए